friends and colleagues, मित्रों, भाइयों बहनों, welcome to the 23rd webinar of the 30 webinar series that INHAF and the partners have been hosting for a long time. मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि हर एक वेबिनार के पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा जरा लंबा इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि the set of people who are coming are new, and I think we also are getting into a whole new direction. So therefore, kindly bear with me if I take 2 more minutes to introduce this whole webinar series. Now, as you know, we started this webinar series sometime in mid-June, and we hope to continue till mid-November, probably till end of November, by which time we will complete 30 to 35 webinars. On an average, we have had a webinar every 5 days since June. And during this period, इस समय में, we have had a large number of topics and themes covered. We talked about slums, talked about migrant laborers, cities as engines of economic growth, talked about importance of the COVID to the gender equation. We talked about how the underprivileged youth of India see our cities and what changes they want in order for them to kind of meet their aspirations. So we had all kinds of people come and share their views. As a matter of fact, we have had as many as 100 urban experts, specialists, professionals, administrators, researchers, thinkers come and share their views and perspectives. And they've done this on cities of today and cities of tomorrow. We also had several international experts. We had people from South Africa, USA, Netherlands, South Korea, even Pakistan. So we had a large number of people who essentially had come. But it is not that we talked about experts and specialists all the times. We had a webinar, had people invited from other walks of life as well. We had, in fact, slum dwellers, payment residents, informal labor, in fact, 14 of them from 5 cities come together to share their problems, concerns, needs, their deprivations, their frustration. And they also shared how would they like this, what's like cities to do to meet their needs and to kind of, set a whole new tone for themselves and the children. Now, this entire series of webinars that we have done is essentially on one overarching theme, and that theme is called Rethinking Cities, Rethinking Indian Cities. And this whole concern, this whole theme is based on a concern that the way cities are, where they function, where they grow, where they develop, much is required to be rethought about our cities. And it also rests on an understanding that if you're looking for livable cities, sustainable cities, people-friendly cities, poor-sensitive cities, inclusive cities, resource-conserving cities, efficient and productive cities, humane cities, then the growth dynamics and the development model that creates the cities requires a major rethink. The kind of growth that we experience and the nature of model that we have is very unlikely to give us the cities
I just described: sustainable cities, livable cities, people-friendly cities. Now, and that is because cities are diabolic in nature. They're good and also bad. We know that the cities are engines of economic growth, that somewhere around 65 to 68% of the GDP is now being produced in our urban sector. They're also a hub of culture, technology, knowledge, innovations. All that is true, but it's only one side of the story. So far cities are concerned, there is also the other side of the story. And that is this, that globally, while cities occupy just 2% of the land mass, they consume 75% of the resources and throw 75% of the waste in the environment. And therefore, there is no overall sustainability, there is no global sustainability without urban sustainability. And for that reason, we need our cities to change. On this webinar series, not only presents the case that there's a great need for cities to change and cities to rethink themselves, it also that says that rethinking is not to be done by the governments alone or the organization of the government. That the rethinking that we're talking about has to be a wider societal endeavor. Everyone needs to contribute ideas, perspectives, and alternatives. So this webinar series that we have been running now for last 6 months, tries to take urban change for the urban sector to the public place. It is trying to take the need for change to the town hall. And it's not only the macro, it's not only talking about the development model. It's how we need to change our slums and need to change our depleting water levels and polluted rivers and inequality and land prices and housing states. We're saying all that needs to change. So that is the context in which this particular webinar series is taking place. It's very hard, it's very difficult for us to judge in terms of how far we are going, but fact remains that the response has been enormous, and we essentially are getting large number of people to come and contribute ideas. Now, before I hand this over to Rakshita ji and a very versatile panel that we have, that let me tell you that we just completed a series of webinars on one theme, and that was on urban mobility. We're also starting another series of sub-theme, which is on urban waters. It is in that context that this new series is being started, that we intend looking at one of the most difficult challenges that we have, and that is in terms of designing an urban employment guarantee program or right to work program. And as a curtain raiser, in order to make a small beginning, this particular webinar is structured to look at Manrega, a rural employment guarantee program, which is going on for the last 15 years. And we have so much to learn. And we are very fortunate having people who have worked and studied on this program very extensively. So with that sort of introduction and saying that this is just the curtain raiser, we would have many more webinars on the design of the urban program. I request Rakshita ji to take over and help us with today's webinar. Thank you very much. Shukriya, Kirti ji, for
इस पूरे आज का जो सेशन है वो कितने सेशंस के बाद आया, एंड व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट फॉर दीज कॉन्वर्सेशंस फॉर लेइंग दैट डाउन। तो मैं बहुत ही संक्षेप में आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं उस पे मैं थोड़ा एक अपनी बात रखना चाहूंगी, और फिर आप सबसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें और बोले, एंड वी विल ट्राई एंड मेक श्योर दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इफ देयर इज किसी को भी, इफ वी कैन पुट इट इन द चैट और point that if anybody needs any of us to repeat what we just said because it was said in a language, yeah, तो आप please हमें बता दीजिएगा। So शहरी रोजगार गारंटी की बात कोई बिल्कुल नई नहीं है। बहुत सालों से एक पहल चल रही है, बहुत जन संगठन, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, मजदूर समूह, बहुत लोग ये बात रख रहे हैं टू ट्राई एंड डिमांड फॉर एन अर्बन राइट टू वर्क। लेकिन ये इस पूरे कोविड लॉकडाउन के भीतर ये पूरे अर्बन एरियाज में वर्कर्स की क्या, जो मजदूर शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो किस परिस्थिति में थे, इट वाज वेरी क्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये बात एक नए सिरे से उठाई गई कि शहरी रोजगार का क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक मुद्दा है which has come into the spotlight once again and it is not just been born today. तो हम शहरी रोजगार गारंटी के बारे में जब बात करते हैं तो एक कोशिश हम ये करना चाहते थे आज के चर्चा से कि एक और रोजगार गारंटी जो 15 साल से चल रहा है और पूरे देश में it's being implemented across 600 odd districts and almost 6 lakh panchayats, the NREGA। तो हम NREGA रोजगार गारंटी से क्या सीख के एक शहरी रोजगार गारंटी की कल्पना कर सकते हैं, what are the lessons that we can learn from an NREGA while conceiving and while imagining for an urban employment, an urban right to work, is what the session is going to look at. And a few comments about just आज की परिस्थिति NREGA में है क्या। हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान ही पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 85 लाख न्यू जॉब कार्ड्स बने हैं। तो लगभग एक करोड़ के आसपास नए जॉब कार्ड्स जुड़े हैं, जो पिछले सालों से एक 22% ज्यादा बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ परिवारों को नरेगा से काम मिला है इस पूरे लॉकडाउन के शुरुआत से आज तक। और ये भी हमने देखा है कि even though NREGA allocations have been their highest ever, there is still inability of an administration to provide the work that is required. There are still 1.55 crore persons जिन्होंने काम मांगा है, 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम मांगा है और उनको काम नहीं मिला है, even at a time when NREGA is being implemented with such focus and rigor. तो ये है आज का मतलब a little bit of a context, and हम हाँ, क्योंकि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था, I've been told, so I've just switched, मेरा वीडियो मैंने 1 सेकंड बंद कर दिया है। तो आज शुरुआत हम करना चाहते हैं हर पैनलिस्ट से। हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं और मैं हर एक पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करके उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। We are starting with, and before actually I just also want to explain the agenda that we will follow. हर एक जो हमारे साथ आज वक्ता जुड़े हैं, हम उनसे 10 मिनट दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी बात रखे इस मुद्दे पे। इन सबके बोलने के बाद हम फिर से आप सबके साथ बात करेंगे और आई विल रेज अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछ के फिर उस प्रश्न का भी आपसे हम सुनना चाहते हैं, आपका क्या जवाब है उस पे। सो दैट वुड बी द राउंड 2 ऑफ द पैनलिस्ट स्पीकिंग, एंड उसके बाद वी विल ओपन इट अप फॉर अ Q&A फॉर डिस्कशन, for general questions that come from participants,
और participants से दरख्वास्त है that if you have any questions, please put it in the Q&A chat, I've been told, and not the normal chat. So please help with that. So we are starting. I would like to invite Mr. Vijayanand to start with his opening comments. Mr. Vijayanand retired as the Chief Secretary of Kerala, and he is currently now serving as the Chairperson of the State Finance Commission of Kerala. Before that, he was also the Secretary of the Ministry of Panchayati Raj. It's actually one of those kinds of people who we really introducing him is a tall task, because he has steered the seminal People's Plan campaign of Kerala that led to the decentralization revolution in the state. And he did that while serving as Secretary Local Self-Government and Planning Department in the state. He has nurtured the Kerala Institute of Local Administration, which is involved with training of government functionaries, of elected representatives, and he's also been involved with the conception and the growth of the Kudambashri network, which is the SHG network of Kerala. And more important than all of that is also that he has been a constant friend to Plains, or rights-based organizations, movements, and has advised them all and us all at many occasions. So we would like to start with hearing from Mr. Vijayanand. Thank you. The first part, I will just focus on the background and also to some extent on the design part of MGNREGS, with vis-a-vis its relevance for an urban program. The first point is that the civil society activism which preceded NREGA really contributed to his design and various facts. So that is a very important learning. The build-up is very critical. That contributes significantly to design of a program. What I am suggesting is similar build-up is required in urban areas, need not necessarily by CSO, but by a lot of people having common interest. Then, unlike urban, the rural areas had a historic experience with employment, employment programs. That is, right from the Mughal days, we had the famine relief works, which the British kind of improved, and after independence, we had a lot of rural employment programs. So that experience really helped in the design. Then, of course, the most important thing we don't have to repeat is the political will. Political will which is pushed by credible, non-partisan, I can call lobbyists or advocates. They pushed it, and space was given to those people to influence even the lobbying, which is not very unusual. It's not made within the confines of a room or with bureaucratic inputs. And mentoring the early stages of the program. They were all involved in the early stages of the program. I think for 4 or 5 years, everybody was actively involved. They continue to be involved. Now, there were a lot of fears. Is it affordable? People thought India is going to go fat with this program. Then, is it doable? Can you start works in 2.5 lakh panchayats? And would it not be a waste? In fact, I remember the World Bank had cautioned Government of India against what they felt was a populist program. But now everybody in the world, hardcore economists, activists, academic, they are praising the contribution of NREGA. I am sure, but for NREGA, India would have had a disaster in this last 7-8 months. So now everybody has realized the value of NREGA. Of course, it has a lot of. Then at this point of time, it goes without saying, the first 5 years, not first 5 years, the first 4 years of NREGA were guided by an outstanding political leader who passed away recently, that is Raghuvansh Prasad Singh. I was a secretary right from day one, and I've attended his meetings. A kind of energy and the compulsion which he pushed. Just compare the other rates, other rights-based development activities, RTE and other things, you will not find that. That initial push is very critical in any such program. Then another very important program is the Ministry of Rural Development has a unique status vis-a-vis the state government. Right after the Gram Sevak thinks that his secretary is the MORD secretary. The state secretaries, you work with the state
and it's almost like an extension of the state, or MORD extends down to the village. Such a thing doesn't exist anywhere in Government of India, let alone urban, but not even in Ministry of Agriculture, not even in Ministry of Panchayat Raj, of which I was a secretary. So that gives you a huge understanding of what is to be done and how it is to be done. Then, of course, the rural-urban divides and rural-urban metro divides need to be borne in mind. The footloose poor, the locals will not be there, low social capital, and the urban areas have all had civic focus. They don't have a developmental focus, unlike the panchayats and blocks, which historically had an anti-poverty development focus. So that shapes the staff capacity and culture in different domains. And I must also tell you, many of you may not know, 30 years ago when I was a collector, they brought in what is called UWEP, Urban Wage Employment Program, which collapsed in no time. Nobody has any experience. I don't think anybody remembers that also. Now, next 5 minutes, I will take on the design, which is very important. This background is very important, the design. One, an act. The earlier employment assurance through a government decision didn't work. An act is very critical. And the clarity of objectives in the act. Many acts may not be very clear. Here they said, provide work or employment, push livelihoods, and strengthen local democracy. So the act is structured with these three grand objectives. And then it is worker-centric. It's not program-centric. So the bundle of rights, it has got gender rights, equal wages, protection to women while working and all that, child rights, even for an infant, it has got child rights, it has got rights of the aged, so you have a different schedule of rights for the elderly, it has rights of persons for disability, again you can have a different schedule, then a whole lot of labor rights, fair wages, timely wages, and decent work. It's not a harsh work condition. The concept of decent work is enshrined in the law, though the word is not used. Then a whole series of governance rights, right from Gram Sabha, labor budget, participatory planning, transparency of the whole process from day one, and most important is accountability. What are the accountability rights there? The social audit, of course, stands out. The grievance redress procedures, the due process going up all the way to Government of India, and it also prescribes a punishment, which I don't think has ever been used. And it has got human rights. Of course, all these are human rights, but more important, inclusion. None left behind. Every person who asks, it is demand-based, you cannot deny it. So that way, it is universal. The other thing is the processes. One is this is all part of the act, the design. So participatory processes, cascading consolidation, it goes from below and well in time and a shelf of projects. So a lot of processes have been brought in. And permissible assets, there we have to really think hard for the urban areas. Pro-poor infrastructure, applicable to both. Livelihood assets, applicable to both. Natural resource management, yes. But at one point of time, there was very serious discussion of can you bring in some services, services of the elderly, services of the disabled into NREGA. But then because of the moral hazard problems involved, it was not pushed beyond that point. Then another design feature, which Government of India has never done to this extent, providing HR support at all levels, particularly at the Gram Panchayat level, with two personnel, a Rozgar Sevak and a technical assistant or a data entry operator. So that most of India's local governments don't have this kind of support. 6% of the allocation, which would amount 6,000 crore during the current year, is to be used for HR support, capacity building, and all that. District level program officer, district program coordinator, and the joint program coordinator, JPC and the DPC. Then the institution setup, the social audit unit, the vigilance and monitoring committee, and the ombudsman, which is not very successful, and the IT architecture, which of course activists like Nikhil have a lot of doubts about, but I found it's smoothened implementation, it's smoothened monitoring, it's smoothened fund flow. Much more can be done, much more can be done for making it democratic and local, so that people use IT at the local level. It's now designed
or a centralized kind of approach. I think that, yeah. Then next comment, I will comment on the innovations. I think I have 2 more minutes, and I will mention the innovations. Involvement of self-help groups. That is the best example is Kerala. Kerala last year spent more money than Bihar, which is one of the largest percentage of poor in India. That shows SHGs can be very good in designing the whole, in implementing the whole program. Then there was an intensive participating exercise in 2014, where you link planning to the labor budget. It's not just assigning works, but planning for local development. Then organizing the labor on an SHG mode, so that you have labor groups which can demand their rights and access works in future. Then skilling the NREGA workers and their children for improved agriculture work, moving on to construction, and even for placement. And another big idea was the human resource of the high office facilitation team for a cluster of villages. Civil society and academics can contribute to make the quality of plant improve. Then a big idea which was partially implemented was barefoot engineers. Then facilitation teams at the block level with Jharkhand operationalized. Then community resource persons with Kerala operations. They go around telling people about their rights, their works, and even it is discussed in the SHG meetings. Then including the persons with disability and the mentally ill. This is done beautifully by Tamil Nadu. And a time and motion study, because this is not a public works program. That is a critical lesson of NREGA. This is basically work by people who never have worked. So most of them are not the hardcore labor. So you need a time and motion study for the elderly, for women, for persons with disabilities and all that. And the biggest thing was bank account. The innovation is not bank account as a no frills pass-through account. It is a savings bank. In Kerala, it is a savings bank. These are some of the innovations. I'll stop here. Thanks. Thank you so much, sir, for really laying out the widest possible landscape for the rest of the panelists, and we really look forward to hearing from you again in the second round. Now I would like to request निखिल डे कि वो अपनी बात रखे. निखिल डे का परिचय मैं दे देती हूँ. वो मजदूर किसान शक्ति संगठन के फाउंडर मेंबर है अरुणा जी और शंकर जी के साथ, और 2 कानूनों से बहुत बिल्कुल उसकी शुरुआत से जुड़े हैं, सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड अलग अलग पीपल्स मूवमेंट्स कैंपेन्स के साथ जुड़े हुए अभी भी है फॉर expanding the rights-based agenda and introducing many more developmental labor rights. और ये social audit, transparency, accountability, grievance redress, ये शिकायत निवारण, जवाबदेही, इन सब मुद्दों से भी जुड़े हैं, और बहुत सारे कमिटियों सरकार के साथ भी इसको कैसे किया जा सकता है, इसके सोच विचार में भी बहुत समय बिताया है निखिल जी ने, और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स के भी मेंबर्स है इन्हीं मुद्दों को आगे ले जाने के लिए. तो निखिल जी आपसे. शुक्रिया रक्षिता, बहुत लंबा परिचय दे दिया मेरा. I saw a message in the chat which said please speak in English as well, so I'll mix the two. दोनों के बीच में मैं प्रयास करूंगा कि दोनों चीजों को किसी तरीके से. Yeah, but Nikhil ji, just one request, because Nagini maybe will follow you after you, so it would be helpful, and we'll try and do some translations for those who. तो मैं ज्यादा हिंदी में ही बोलूंगा. Please. या हिंदी में ही बोलूं. हिंदी में ही, एंड मैं टाइप करती रहूंगी ट्रांसलेशन. बिल्कुल. तो मैंने अभी मैसेज देखा कि विजय आनंद साहब भारत के एक ट्रेजर हैं. ये बिल्कुल सही है. ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़े धरोहर हैं एक तरीके से. और विजय आनंद जी ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे लिए उन चीजों को अब दोहराना अजीब सा है, तो थोड़े अलग ढंग से कोशिश करूंगा इसी चीज को कहने के लिए. विजय आनंद जी वाले ही चीजों को थोड़ा सा रखूंगा. पहली तो बात मैं कहूंगा that this is ये पूरा
सेमिनार है कि एनआरईजीए से क्या सीख के हम एक अर्बन गवर्नेंस, तो मैं इनहाफ को और कीर्ति जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा कि नरेगा से क्या हम सीख सकते हैं और क्या हम अर्बन गवर्नेंस में आ सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा कीर्ति जी को और बाकी लोगों को भी कि नरेगा के वर्कर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने माइग्रेंट लेबर में देखा है। वो कुछ दिन तो शहरों में रहते हैं, कुछ दिन उनके गांव में रहते हैं, या एक परिवार का एक सदस्य शहर में रहता है और गांव काम के लिए जाता है और बाकी लोग गांव में हैं। तो बहुत कनेक्शंस हैं लोगों के बीच में भी, तो इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और शुरू में ही जो विजय आनंद साहब ने कहा था कि आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी से आया, उन्होंने कहा एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में मुगलों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से और भारत में भी ये चीजें थी, लेकिन एक पॉलिटिकल विल भी आया। अब वो एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक आइटम था जो जिसको सब लोगों ने पकड़ के रखा और उसकी वजह से ये कानून आया। और वो मैं उस लाइन को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि उसमें अर्बन का भी जिक्र है। तो उस लाइन को तो उस समय हम पकड़ के रखते तो शायद हम वहां तक पहुंच जाते। द यूके गवर्नमेंट विल इमीडिएटली इनैक्ट अ नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. This will provide a legal guarantee for at least 100 days. Please note, it did not say a National Rural Employment Guarantee Act. It said National Employment Guarantee Act. It will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment to begin with on asset-creating public works programs every year at minimum wages. Also, please note that for at least one able-bodied person in every rural, urban, poor, and lower middle class household. तो बात ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये एक राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात हुई, तो एक तरीके से एक राइट टू वर्क हर भारतीय नागरिक को और परिवार को, और जो विजयानंद साहब ने कहा ये एक सेल्फ सिलेक्शन का मैकेनिज्म था। तो क्या है इसमें मोटी चीज? एंड अगेन सम ऑफ दीज थिंग्स आर अ रेपिटेशन जो विजयानंद साहब ने कहा, लेकिन अच्छा है नगिनी जी को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये मैं जन आंदोलनों की तरफ से, क्योंकि जब से महाराष्ट्र का एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, एक सपना था सबके मन में कि हर राज्य में और पूरे देश में ऐसा कानून हो जहां मांगने पर लोगों को काम मिले। इसका नारा बहुत अहम है और उस नारे को हम जपे नहीं, बोले नहीं, इफ वी डू नॉट रिपीट इट, कि हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। एवरी हैंड डिमांड्स वर्क, every bit of work demands a just reward. As Vijayanand ji said, it was not that asset creation or infrastructure was at the core of it. It was when people do work, what will they do? They will do infrastructure building, they will do land development, they will do many things in rural areas and maybe many other things in urban areas. तो ये, लेकिन लोगों को काम देना है, हर हाथ को काम देना है और उसका पूरा दाम देना है, वो एक बहुत अहम चीज थी इस कानून के अंदर। तो पहली बार मेरे ख्याल में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया और कुछ ही दिन बाद एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। तो पहली बार इकोनॉमिक राइट्स का एक कानून आया। तो विजयानंद साहब ने इसका पूरा आर्किटेक्चर बताया है, लेकिन उसके कोर में है कि ये एक कानूनी हक था ये, और ये कानूनी हक एक तरीके से लोगों को इस किस्म का हक मिला कि उनको 100 दिन का केवल कोई स्कीम नहीं था, केवल अंग्रेजों और मुगलों के टाइम का वो ऐसा नहीं था कि जब अकाल पड़ रहा है तो एक हैंड आउट मिल रहा है, या जो JRY या कोई और चीज था, एक अश्योरेंस था लेकिन गारंटी नहीं था। यहाँ कानून था और कानून ने कहा गारंटी है कि आपको मिलेगा। तो वो गारंटी कैसे इन्फोर्स हुए? तो मैं 3-4 चीजों को कह के मैं ये गारंटी कैसे इन्फोर्स हुए वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आऊंगा। क्या 3-4 चीजें हैं कि पहला था कि ये एक आर्थिक चीजों का भी एक गारंटी मिला पहली बार हमारे कानून में। नहीं तो कुछ और फंडामेंटल राइट्स तो मिलते हैं कि हम बोल सकते हैं, लेकिन वो राइट नहीं था कि हमें खाने का अधिकार मिले या हमें रोजगार का अधिकार मिले या हमें स्ट्रीट वेंडर्स जैसी चीजों में उनका अधिकार मिले। नंबर 2 कि ये काफी दिनों तक लेबर डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट के बीच में फुटबॉल की तरह चलते रहा और अंत में रूरल डेवलपमेंट में आया। लेकिन इस कानून में दोनों चीजें हैं, मजदूरों के हक भी हैं
और लोगों के नागरिकों के हक भी है। नागरिकों के हक है दैट वी हैव द राइट टू वर्क, वी हैव द राइट एज सिटीजन्स टू अ सर्टेन टू एवरीवन बीइंग एबल टू गेट वर्क। वी हैव अ राइट टू ट्राई एंड लुक एट इट कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे वंचित है, उनको सबसे ज्यादा मिले। तो उस किस्म के हक का भी मिक्सचर है और लेबर के राइट्स का भी मिक्सचर है, तो वो भी हम अर्बन सिनेरियो में ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नमेंट को कोर में बनाया, तो पंचायत आर द कोर ऑफ इट, एंड इन अर्बन गवर्नेंस आल्सो वील हैव टू मेक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द कोर ऑफ, कि वहीं से निर्णय होता है। इसीलिए लोकल प्लानिंग हो सकता है, इसीलिए ये सारी चीजें हो सकती है, और इसीलिए गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का यूनिट का हिस्सा बन सकता है। एक और चीज था कि जहां हम कभी भी हक देते हैं, ये एक ऐसा हक था जहां यूनिवर्सल राइट्स थे और एक तरीके से सेल्फ सिलेक्शन हुआ। जो मिनिमम वेजेस पर आने के लिए तैयार हैं उनको काम मिलेगा और किसी को मना नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से कोई भी सबसे अमीर व्यक्ति गांव में जो रहने वाला है वो भी आके 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है, तो लगेगा कि हाँ उसको जरूरत है काम की और वो आ सकता है। तो हमारे जो बीपीएल और इन सब चीजों में जो इतनी समस्याएं हुई वो दूर हुई इसके वजह से, और इस वजह से ये कानून दौड़ा। अब 10 हक मैं लास्ट उसी के साथ एंड करूंगा कि ये हक भी हक था क्या? 100 दिन हर हाथ को काम मिले, 100 दिन का काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, वो एक तरीके से कानून है। लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो हम कई बार कहते हैं कि कानून में 10 हक है, 10 एंटाइटलमेंट्स। तो 10 हक को मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूंगा, आई विल कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि और उसके साथ एंड करूंगा। नंबर 1, दैट यू हैव द राइट टू 100 days वर्क पर हाउस होल्ड, ये कानून में डाला। नंबर 2, वो कैसे होगा? यू हैव द राइट टू अ जॉब कार्ड, टू गेट अ जॉब कार्ड इन 15 days, 15 दिन में जॉब कार्ड का हक मिलेगा। उसमें सारे जो एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके नाम आएंगे। नंबर 3, आपको 15 दिन के अंदर काम का हक है, आप काम मांगो, रसीद मिलेगा और 15 दिन के अंदर आपको काम मिलना चाहिए, तो वो तीसरी बात। नंबर 4, और यदि वो काम नहीं मिले, गारंटी कहां से आती है? यदि आपको 15 दिन में काम नहीं मिले तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिले, तो वो गारंटी आपको देता है। नंबर 4, कि आपको न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस मिलेगा काम पे। नंबर 5, कि आपका पेमेंट 15 दिन के अंदर होगा। तो ये सारे हक रोजगार के हक हैं, एम्प्लॉयमेंट के हक हैं। तो आपको 15 दिन में पेमेंट मिलेगा, और 15 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो फिर से वो गारंटी वहां हो रही है। नंबर 6, कि सारे चीजें खुले होंगे, उस कानून के अंदर ही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, केवल सोशल ऑडिट नहीं, डॉक्यूमेंट्स खुले होंगे, सबको पता चलेगा। नरेगा का वेबसाइट भी आज सबसे खुला है, सब जगह खुला है। नंबर 7, कि आप सोशल ऑडिट तो एक है, सीएजी भी ऑडिट करेगा, दूसरे भी ऑडिट करेंगे, लेकिन जनता खुद ऑडिट करेगी, तो वो लोकतांत्रिक चीजों को अंदर डाल रहा था, वो हक है। नंबर 8, कि आपको 7 दिन के अंदर किसी शिकायत का निवारण होगा, वो भी कानून के अंदर है, सेक्शन 25, तो वो कानूनी हक बना कि ग्रीवेंस रिड्रेस का हक होगा। नंबर 9, कि आप ही खुद प्लान करोगे काम को। कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर साहब नहीं करेंगे, दिल्ली और जयपुर में नहीं करेंगे, या गांधीनगर में नहीं करेंगे, आप खुद अपने गांव में शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ग्राम सभा में, तो आपको प्लानिंग का भी हक है। और आखिरी हक जो इसके अंदर है, वो मैंने कहीं इसके अंदर कह दिया लेकिन मैं भूल रहा हूँ कहाँ है। 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिलेगा, तो अपने इलाके में मिलेगा, आपको कहीं दूर नहीं भगा सकते। ये सारे चीजें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए था। क्यों नहीं आया यूपीए सरकार के टाइम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी? क्योंकि उसका नेचर बहुत अलग होगा, हमें बैठना पड़ेगा। एक ही कानून बन सकता है लेकिन उसके 2 हिस्से बनने पड़ेंगे। अब तो एक दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। उसमें जब हम सोचेंगे तो हक आधारित सोचना ही चाहिए, लोगों को उसके केंद्र बिंदु में रखना चाहिए, और शायद बहुत अच्छा उससे बन। बहुत शुक्रिया निखिल जी आपके ये रखने के लिए। एंड आई थिंक डेफिनेटली एक नगीनी जी के लिए एक इंटरवेंशन के लिए बहुत ठीक बात है कि हम 10 हक पे रुके।
जो एक यूनिक डायमेंशन है NREGA का, और कैसे इसको एक शहरी रोजगार गारंटी में उसकी कल्पना की जा सकती है। तो अभी मैं दरख्वास्त करूंगी नगीनी बीबी, जो झारखंड से लातेहार से हमारे साथ जुड़ रही है। नगीनी जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। और नगीनी बीबी के साथ एक और साथी है जिनका भी मैं परिचय देना चाहती हूँ, सबिल, जो चौपाल संस्था से है। और बहुत और थैंक यू सबिल भाई कि आप मदद भी कर रहे हैं इस पूरे चर्चा में। और नगीनी बीबी हमारे साथ जुड़ी है, वो खुद एक नरेगा मजदूर है, और ये सहायता केंद्र जो अलग अलग जगहों पे चल रही है कि नरेगा के मजदूरों को मदद हो डिमांड रजिस्ट्रेशन करने के लिए या किसी शिकायत को दर्ज करने के लिए, वो सारे केंद्र कैसे चलेंगे, नरेगा मजदूर से ही चलेंगे, उस पे उन्होंने बहुत काम किया है। सबिल भाई ने भी बहुत काम किया है राजेंद्रन और उनके ग्रुप के साथ। तो अभी हम नगीनी बीबी से सुनना चाहेंगे उनके राय एक रोजगार गारंटी शहरी के लिए हम क्या सीख सकते हैं। जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। नरेगा अथी से हम शहरी के विषय में बता रहा हूँ कि गारंटी रोजगार जो होता है, घर गरीबी के घर होता है, से घर बनाना चाहिए, बना के उसमें पैसा भी मिलना चाहिए, मिलकर और मैंने घर पूरा बना कर अथी करेगा, वो भी हो गया। और एक भी है कि पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, ये सुअर पालन हो गया, ये सब होना चाहिए। और उसको बनाना चाहिए। घर बनेगा, अथी होगा तबे न अथी होगा, तो वो भी बनना चाहिए। उससे कुछ सरकार से मदद मिलना चाहिए, मदद मिलेगा और बनेगा, अथी होगा। एक तो है कि मदद मिलेगा तो उससे बहुत लाभ भी आएगा, बहुत अथी भी होगा। हाँ, लाभिक भी आएगा, लाभ होगा तो सब गरीबों लोग के भी सब आमदनी भी बढ़ेगा, आमदनी बढ़कर भी सबको लाभ आएगा, गरीब लोग के बहुत अथी होगा। शहरी रोजगार देहाती सालों भर काम चाहिए, अब दाम भी चाहिए, अच्छा ढंग से काम भी मिलना चाहिए और दाम भी मिलना चाहिए। और देखिए कि हम लोग काम भी करते हैं, सही अथी मजदूरी भी नहीं मिलता है। अब हम लोग मजदूरी भी करते हैं तो काम भी करते हैं तो दाम भी नहीं मिलता है सही ढंग से, या रोजगार भी नहीं मिलता है। देखिए इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, अगर दाम भी बढ़िया से नहीं मिलता है और काम भी नहीं मिलता है। अब 100 दिन के रोजगार है, 100 दिन के रोजगार में क्या होगा? कम से कम हम लोग के 3 महीना अथी साल भर के काम होना चाहिए, 12 महीना के, तब ने हम लोग के सक्सेस होगा। गरीब आदमी हम लोग जी पाएंगे, बाहर नहीं जाने पड़ेगा, बाहर नहीं जाएंगे। अब इसी चलते कम भी रेट रहता है, कम भी अथी रहता है, इसी चलते बाहर भी चल जाता है लोग, अब बाहर जाकर काम करता है। अब अगर उतना रेट इतना अथी मिलेगा यहीं पर भी, तो गांव में या शहरी में मिलेगा तो बाहर काहे ला लोग जाएगा? यहीं काम करेगा, यहीं खाएगा, यहीं रहेगा, यहीं अच्छा तरीके से सब कुछ होगा।
शुक्रिया। सबिल भाई, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या? आप दोनों अपनी बात रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। जी, जैसे एक तो कि लोगों के पास मतलब घर नहीं रहता है। शहरों में कई लोग मतलब ये झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको अगर रोजगार गारंटी के तहत में जो मिल रहा है अभी इंदिरा आवास, तो वो शहरी पे भी होना चाहिए ताकि उनका घर भी बन जाए और उनका मजदूरी मिले जो बाहर काम करने जाते हैं वो। और दूसरा ये कि जो 100 दिन का गारंटी है लोगों का, वो शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पे उन लोग को ज़्यादा जरूरी होता है। तो उनको कम से कम साल भर नहीं, फिर भी अगर 8-10 महीने भी लोगों को काम मिले तो एक अच्छा होगा कि वो लोग मतलब दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे काम करने के लिए। और पेमेंट पे अगर बोला जाए तो पेमेंट मतलब जल्दी होना चाहिए, क्योंकि शहरी जगह पे अगर रोजगार गारंटी का ये करते हैं, काम करते हैं, तो उनको मतलब रोज कमाते हैं वहाँ के लोग और रोज खाते भी हैं, रोज उनको पैसे मिल जाते हैं। तो उस टाइप से कम मतलब सप्ताह में उन लोगों को अगर पैसे मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, तो ये बेहतर हो सकता है। तो इतना ही। चलिए, बहुत शुक्रिया सबील भाई और नगीनी बीबी। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और मुझे पता है आप बहुत मुश्किल परिस्थिति से इस कॉल में भी जुड़े हैं। बिजली का प्रॉब्लम है, बारिश, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अंधेरा भी हो रहा है। तो जी एक तो आधा माफी कि काफी मुश्किल से आप जुड़ रहे हैं, और आधा तो बहुत शुक्रिया लेकिन कि इस मुश्किल जी के बाद भी जुड़े हैं। तो जी अभी हम दूसरे पैनलिस्ट पे जाएंगे और फिर से हम आपके पास आएंगे। तो उस दौरान अगर आप म्यूट करके वीडियो ऑफ करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और बोल ही लेता हूँ, थोड़ा सा और समय मतलब इसमें हम लोग ये सोच रहे थे और कि जैसे लोगों को पशुपालन के लिए भी इस पे रोजगार गारंटी में रखा जा सकता है। उससे क्या होगा, मुर्गी पालन या सुअर पालन या गाय पालन, इस सब में भी थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि उस पे एक तो गाय पालन पे अगर सोचा जाए तो उस पे दूध भी मिलेगा और आमदनी भी बढ़ेगा। और मुर्गी पालन में भी अगर देखें तो बच्चों को आजकल जैसे बाहर से अंडे आ रहे हैं मध्याह्न भोजन में, तो वो मिल पाएगा अगर मुर्गी पालन करें तो। और सुअर पालन में भी बहुत आमदनी होता है, उसको भी शहरी जगहों पे पाल करके और फिर रोजगार के रूप में, मार्केटिंग रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया। तो अभी हम अगले पैनलिस्ट पे जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी है सौम्या, जो तेलंगाना राज्य में सोशल ऑडिट यूनिट, जो सामाजिक अंकेक्षण का एक ढांचा है, उसके डायरेक्टर है। और वो बहुत सालों से इस सामाजिक अंकेक्षण यूनिट हेड करती आई है। और जो पहले एक राज्य था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलके एक राज्य थे, तो इस it was the first state to have demonstrated how possibly the institutionalization of social audit can take place and should look like. So it's the social audit unit really has contributed to it has a long legacy of showing the way forward for the rest of the country. और एक और चीज में केवल नरेगा के सोशल ऑडिट कैसे होने चाहिए, वो कैसे दिखाया जा सकता है, उसके अधिक ये ऐसा पहला सामाजिक अंकेक्षण का ढांचा था, सरकारी ढांचा था, जिसने ये भी दिखाया कि नरेगा के बाहर भी जो अलग अलग योजनाएं हैं, जो अलग लेजिस्लेशंस है, उनका भी ऑडिट कैसे किया जा सकता है इसी ढांचे से। सो नॉट ओनली डीपनिंग एंड शोइंग हाउ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट can look like and should look like, but also widening how it can be replicated in more schemes and programs. And it's Soumya too has also not only within the country, even in countries abroad, for instance like in Kenya, have shown where social audits
can be introduced, and उसके बारे में भी I hope सौम्या थोड़ी देर बात रखे, क्योंकि जितना मुझे समझ है वो भी एक शहरी इलाके में एक सोशल ऑडिट का पायलट किया गया था किसी मुद्दे पे. तो we are very happy to have Soumya also, and I request her to please now speak. थैंक्स रक्षिता. मैं माफी मांगूंगी कि मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी. तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के वजह से सुबह से हमारे घर में बिजली नहीं है, तो मैं फोन पे अपने बैटरी को कंजर्व करने की कोशिश कर रही हूँ. अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, मतलब एक इस तरीके का कानून के बारे में सोचना इस वक्त शायद सबसे ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर हम देखें कि ये पूरे पैंडेमिक कोविड के समय में, प्री कोविड भी जिस तरीके से नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही गरीब परिवारों के लिए बिल्कुल वरदान जैसे काम किया है, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि 1-2 हफ्ते इनिशियली लॉकडाउन की वजह से नरेगा को बंद कर दिया गया, उसके बाद खोला गया, लोगों को वापस काम में लाया गया. जिस तरीके का एक डिस्ट्रेस था, क्योंकि लोग वापस शहर से गांव आ रहे थे और गांव में वो काम वापस एनआरईजीए में, मतलब हमारे यहाँ तेलंगाना में मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि 3 लाख लोग पहले बार काम पे आए हैं. तो क्या आप इसका एक बहुत जल्दी से एक सर्वे कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये सही में हैं या ऐसे ही घोस्ट वर्कर्स के नाम लिखे जा रहे हैं. तो हमने एक सैंपल लिया उन 3 लाख लेबर से, और जब जाके वेरीफाई किया तो हर घर में हमने पाया कि जो लोग शहर में काम कर रहे थे, लॉकडाउन के वजह से वो बहुत ही दयनीय परिस्थिति में, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ थॉटलेस soulless act that was done with them, they returned to their villages, और पहली बार 3 साल में या 4 साल में या 6 साल में वो अपना कार्ड बनवा रहे थे, या जो कार्ड था उनका उसको रीएक्टिवेट करा रहे थे, काम पे आ रहे थे. तो इससे बहुत क्लियरली ये पता चला कि आज भी काम की एक गारंटी जो है, वो लोगों में एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहता है कि अगले दिन का खाना उनको कहाँ से मिलेगा. और जब एक गारंटी होती है काम की और वो सरकार लेती है, एक इलेक्टोरली वोटेड इन सरकार लेती है कि हम लोगों को काम देंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है. वो गारंटी अपने आप में एक तरीके से उनकी मानसिकता को भी बढ़ाता है कि चलो सरकार कम से कम हमारे बारे में सोच रहा है. अर्बन एरियाज में अगर हम नरेगा की तरह एक स्कीम के बारे में सोचते हैं, एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम, बिकॉज अगर आप शहरी इलाकों में देखो तो सरकार अपने आप में कितना सारा काम आउटसोर्स करता है. म्यूनिसिपैलिटीज में सिविल वर्क्स जो होते हैं वो सारे के सारे आउटसोर्स होते हैं. लेबर बाहर से आता है, कॉन्ट्रैक्टर्स उन लेबर के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ऐसे जगहों में हम क्यों नहीं वो गारंटी दे सकते हैं लोगों को सरकार की तरफ से कि हम एक एक्ट बनाएंगे जिसमें लोगों को कानूनी तहत पे हम काम देंगे. अगर नरेगा को आप लें तो आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट नरेगा कि किस तरीके के काम होते हैं, काम किस तरीके का होना चाहिए था. बट इवन टुडे मुझे यही लगता है कि without that guarantee of work, which is what it was meant to be, I mean the whole idea of creating assets, मतलब कि अच्छे assets बने, लोग उसका कोई फायदेमंद assets बने, ये subsequently लोगों ने जोड़ना शुरू किया. But the primary philosophy behind the NREGA was कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम का पूरा दाम मिलना चाहिए, जैसे निखिल जी ने कहा. तो in situations like this, एक अर्बन एक्ट के बारे में जब हम सोच रहे हैं कि डिजाइन, विजयानंद साहब और निखिल जी ने दोनों ही ने ये कहा कि जिस तरीके का एक एक्ट डिजाइन किया गया उसमें मल्टीपल हक इनकॉर्पोरेट किए गए. आई थिंक एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल हैव टू आल्सो इनकॉर्पोरेट सिमिलर राइट्स, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू डू इट. In fact, if there was a way government becomes the begins to show the path
I am sure the private sector will also, be willing to from their side put in the same kind of effort in terms of mapping skills, employment banks जहाँ लोग register कर सकते हैं. In fact, मैं जब बाकी सब बात कर रहे थे तो मैंने सोचा एज डायरेक्टर सोशल ऑडिट, नरेगा ने एक चीज क्या सेंट्रल फोकस में लाके खड़ा किया, वो था अकाउंटेबिलिटी वाला मुद्दा. आज भी लोग नरेगा के तहत सोशल ऑडिट्स होते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, लेकिन जो वेबसाइट है उससे खूब सारा इंफॉर्मेशन लेके लोग अपने आप में भी या तो आरटीआई एप्लीकेशंस लगाते रहते हैं, या आरटीआई को काफी एक बूस्ट मिला है नरेगा के थ्रू. मैं सोच रही थी कि अगर एक अर्बन गारंटी एक्ट आता है और उसके तहत म्युनिसिपैलिटीज को लोगों को रजिस्टर करके काम देना पड़े, तो लोग तो कल ये भी पूछने लग जाएंगे कि उनकी म्युनिसिपैलिटी उनके पैसे के साथ कर क्या रहा है. What is it that they are doing with taxpayers' money? I mean, what is it that they are building in terms of, say, toilets in urban areas? What are they doing with greenery? What are they doing with beautifying, the city? These are questions that people will then start automatically asking, because once you start guaranteeing poor people work in urban areas, their engagement with the cities will go up not once but multifold. तो एक तरीके से मुझे लगता है कि समय आ गया है जब सरकार ये जिम्मेदारी उठाए और एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में ना केवल सोचें, पर उसको इनफैक्ट पुश करें. एंड आई थिंक it's not just civil society alone, but I think citizens of this country also have that responsibility towards the people who we depend upon. हम काम पे जाते हैं तो इसलिए जा पाते हैं क्योंकि एक पूरी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है हमारे पीछे जो हमारे घर चलाने में हमारी मदद करती है, हमारे पूरे जिंदगियों को चलाने में हमारी मदद करती है. तो क्यों नहीं ऐसे लोग, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को इसी के थ्रू questions of minimum wages, which very often in cities is not paid leave, which is not given to any of the workers, things like unemployment allowance, things like timely payment, खूब सारी चीजें, equal wages, काम का पूरा दाम भी मिलने लगेगा, मतलब कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी आए तो खूब सारी ये चीजें सोचे भी जा सकते हैं. ये सही है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से वो शायद अलग होगा, लेकिन 2-3 चीजें शायद कॉमन होंगी. एक तो ये कि म्युनिसिपल लेवल्स पे अगर आप चलाना चाहते हो तो नेचुरली वार्ड्स, यहाँ के जो वार्ड मेंबर्स हैं, मेयर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. उनकी पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. I think in one sense it is re-engaging with cities and with people who live in the cities, especially those who live in extremely abominable, terrible conditions. It's a way of engaging with them, making their faces known, making their lives known to the people who completely, मतलब मुझे लगता है कि हम तो उनका खून ही चूसते हैं एक तरीके से. तो कुछ गारंटीज जो हम अपने काम से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से मांगते हैं, वो शायद उन तबके के लोगों को भी मिलेगा जो आज तक हमेशा उस पेरिफेरी में मतलब एंट्री भी नहीं मार पाए हैं. तो आई वुड लाइक टू एट दिस पॉइंट लीव इट एट दिस, बट मुझे लगता है कि एक समय तो जरूर आ गया है जब एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में हम सोचें, और NREGA ने रास्ता दिखाया है तो ये मुश्किल नहीं है. Rakshita, I'd like to leave my thoughts here. Thank you, Soumya. And actually, your concluding thoughts were a good conclusion to the first round of the panel also. So thank you for also doing my bit. So yes, I think this was a very interesting, insightful set of comments, and we've got a lot of questions that have come in, and I have been noting them all down. So what we're going to try and do is go back to the panel, if you're all okay, in the same sequence that we spoke, so that people who spoke towards the end get a bit of a break, where I'll try to club questions that I wanted to ask you, and also a little bit of what has come.
So आप मतलब मैं एक प्रश्न आपके साथ रखूंगी और आप अगर 5-7 मिनट में उसका उत्तर दे सके, और फिर सभी आप चारों से सुनने के बाद बाकी जो प्रश्न बचे हैं जिन लोगों ने रेस किया है या इस दौरान और रेस करेंगे, हम उस पर एक चर्चा कर सकते हैं. So if I can go to Mr. Vidyanand, and one question to you, sir, also that has, are you there, sir? Yes, Yes. I'm here. Okay. Yes. So one question is that we have seen, I mean, the critical role that was played by the local self-government in the implementation of NREJ. And like you mentioned, not only functions were devolved, but also resources were devolved to the panchayat in terms of human resource, in terms of digitization support. Now, when we think of an urban employment guarantee, what do you see as the key roles and functions of an urban local body? What will it have to play, and how will a ULB as it is today have to be empowered financially, administratively, functionally, so that it can play that role? So that's a question to you, sir. Thank you. The first thing I'll directly answer a question and then respond to some of the questions that I saw in the Q&A box. The most important thing is urban local governments are, even after 74th Amendment, have not become development bodies except in Kerala. Even in Kerala, after 25 years, they have the civic body culture. Civic body culture is very different from a development body culture, which is what the earlier blocks had. Blocks had been there from 1950s. There may be corruption, there may be other things, but they know development. So that kind of culture of an organization is very important. At the same time, you can't create a parallel structure. District urban development agencies were total failures. They didn't even take off. So we have to invest in the local government and gradually bring them into the developmental culture, extension culture, pro-poor behavior, which you don't find. You live in a metropolis. You will not see any pro-poor behavior in any of the activities. Very difficult in a kind of thing. Even in Kerala, you find panchayats are more pro-poor than the municipalities and corporations. Their demand and political competition is very high. So that way, I agree with you. We have to invest in local governments with a higher allocation perhaps for administration. Then another important question was raised is, because you can't see NREGA as a lone vertical. It's part of a larger anti-poverty program ecosystem, which will include MSME, building skills, giving houses, minimum needs. So that is very important, more so in urban areas, because other things are weak in urban areas. So we need a kind of thing. Then, of course, the answer to the first question, initial days of NREGA, there was great emphasis on capacity building, but later it almost stopped. So capacity building is just conveying the rules, but real capacity in organizing works, training your technical persons, conducting time and motion studies, that didn't work out. So that is again very, very important. Then a big question we didn't answer, though people hinted, the issue of wages. In NREGA till 2009, we paid the minimum wages. But many people may not know why the government of India changed. We all objected to it, but I wouldn't blame them. One state raised the wage from 40 to 60 to 100 in 1 year, whereas the real wage rate of the state and even the state paying wages was around 50 to 60. So they thought government of India is giving free money, let us raise it very high. So unless you have a due process of fixing minimum wages, in the earlier days, there used to be very meticulous, better than the pay commissions for government servants. They used to fix wages according to so many things. So you need a special minimum wage commission for this. Of course, state minimum wages will not, you can't change the act, but for this, the act itself provides for a minimum wage commission, and then you can index it to things like NREGA. That's very, very critical. But then there's another risk. The wages are very low under NREGA too. So that shouldn't attract people to the urban employment guarantee program. That's going to be a big thing. And if you keep out rural, migrants will get a problem. This is a big dilemma for which we have to seek an answer. Then, of course,
NREGA or an employment guarantee program is not a final solution. Somebody asked the question. You can't make people keep on working harder and harder in this. Ultimately, it's a transitional thing. It's a palliative. So real success of NREGA will come when NREGA liquidates itself. I don't know when, but that should be the objective, to remove people from poverty. So the assets feed into livelihoods, not just infrastructure, feed into livelihoods, and then skilling on the job and their children, that goes, because it's a self-targeting program. So the NREGA workers should benefit from a lot of other things. So these are my quick comments. Thank you, sir. And while you spoke, there were more questions to you, which I'll try to bring up at the last concluding session. तो निखिल जी, आपसे ये सवाल है कि for someone who's been closely associated with watching the implementation of NREGA over the past 15 years, what are the things or what are the kinds of impacts or interventions that you felt जो नरेगा नहीं कर पाए, लेकिन एक शहरी रोजगार गारंटी एक opportunity है उसको करने के लिए? So what are the kinds of interventions that even an NREGA could not do, which you now see there is potential when we talk about in terms of an urban employment guarantee? तो सबसे पहले चुनौती अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की मैंने पहले भी बात की थी कि ग्रामीण परिस्थिति और शहरी परिस्थिति बहुत अलग है। वो बाकी लोगों ने भी कहा है और विजय आनंद साहब ने भी कहा। तो ग्राम सभा जैसा यूनिट नहीं है शहर में, लोकल गवर्नमेंट बहुत अलग ढंग से डेवलप्ड है। तो चुनौतियां क्या मौके भी बन सकते हैं, ये एक चीज हमें समझना पड़ेगा। और एक चीज से हमें लगता है, वन थिंग दैट वी फील अ लॉट, जो उस समय भी लगा कि हमारे जो बहुत सारे मजदूर हैं, जब हम बात करते हैं जो माइग्रेट करते हैं, शहरों में जाते हैं, उनसे बात करो तो वो कहते हैं वो क्यों जाते हैं शहर में, कमाने के लिए, और फिर भी वहां बहुत परेशान है। And why is that? Because they are earning but they don't have the right to live where they work. रह नहीं सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में उनको इलीगल कहा जाता है, उनका ठेला चलाते हैं तो इलीगल है। Every part of their lives is actually either made illegal or even criminalized at various points, जबकि वो जाके बस केवल कमा रहे हैं। तो एक चीज जो शहरी रोजगार गारंटी में करने की बहुत जरूरत है, वो मेरे ख्याल में is to recognize and regulate the kind of work. सौम्या ने भी बात की थी कि मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं लोगों को। Look at all the numbers of people who are doing domestic labor. और कितने लोग स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, कितने लोग ठेला चला के या कहीं एक छोटा सा कैबिन लगाते हैं, और हमेशा म्यूनिसिपैलिटी का डर है, किसी और का डर है। और शहर के अमीर लोग तो उनसे पूरा लेबर लेते हैं, काम लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम लेते हैं, लेकिन कानून नहीं मानते। तो कानून को भी हम यदि रेगुलेट करें, यदि हम उनके हक वहां बनाएं, शायद पैसे की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन शहर का एक बहुत बड़ा लेबर, वन वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर कैन गेट बेनिफिट इफ वी मेक पार्ट ऑफ द अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और फ्रेमवर्क की जिस काम में करो, जो विजयानंद साहब ने कहा है, डिसेंट वर्क, that all urban workers, if they are given decent work, तो बहुत सारे चीजें ठीक हो सकते हैं। शहरों में ही हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग का अब बड़ा हिस्सा, एक गांव से शिफ्ट होके, गांव में टॉयलेट्स लगाने लग गए, लेकिन शिफ्ट होके अब शहरों में, और ये सुअरेज में जो वर्कर्स को जाना पड़ता है उनको, या ये जो जितने लोग काम कर रहे हैं वेस्ट पिकर्स, ये सारे इनफॉर्मलाइज्ड हैं, लेकिन पूरे शहर को सपोर्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज, इफ वी कैन थिंक अबाउट एंड कंसीव ऑफ हाउ वी कैन रेगुलेट, गिव राइट्स टू, एंड एक्चुअली enable people for their own work to be recognized in decent ways, with minimal kinds of human rights within that, within labor rights within that, and that itself will give an employment guarantee of one kind. और फिर उसमें हम ये जरूर और जोड़ें, पब्लिक वर्क्स को जोड़ें, ग्रीन वर्क्स को जोड़ें, और चीजों को भी जोड़ें उसके साथ साथ एज अ बैकअप। तो एक बहुत तगड़ा हो सकता है, उससे हम लोग सीख सकते हैं गांव में। और इसका एक छोटा उदाहरण मैं दूंगा।
when NREGA had minimum wages as a guarantee, it was the first time in rural India कि minimum wages started to become a reality. नहीं तो कानून था और उसका implementation था ही नहीं. तो ऐसे ही यदि हम शहर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स डाल देंगे ताकि सारे मजदूरों के हक भी वहां मिले और ठीक से मिले और वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी का हिस्सा हो, तो शायद फिर हम आगे एक उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून भी ठीक से चलने लग जाएंगे उस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की वजह से. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा एक उदाहरण के रूप में कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मस्ट टेक दैट इनटू अकाउंट. इट कैन बिकम अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी और उसकी वजह से इतना पैसा भी नहीं चाहिए. नहीं तो आज की तारीख में भारत सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. तो पैसा नहीं है तो पैसे, शायद इतने पैसे नहीं चाहिए हों. एंड दैट विल ऑल्सो मेक फॉर अ मच बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट इन अर्बन एरियाज. कीर्ति जी ने शुरू में कहा था कि 70% रिसोर्सेज वहां खर्च हो रहे हैं, 2% लैंड मास है. तो वो 70% रिसोर्सेज कैसे खर्च हो रहे हैं और इंसान कैसे हैं उसके बीच में, ये एक मौका. शुक्रिया निखिल जी. अगला सवाल नगिनी, पीबी और सबिल दोनों से है. तो आप हमारे साथ हैं नगिनी और सबिल? जी. हाँ ठीक. तो आपने जब अपने बात रखा तो बहुत बढ़िया आपने कहा कि 100 दिन ही क्यों. और यहाँ पे कोई इस वेबिनार में भी उन्होंने किसी ने टिप्पणी छोड़ी है कि 100 दिन ही क्यों. तो 12 महीने का काम मिले, काम का पूरा दाम मिले और काम भी इतने सारे अलग प्रकार के हो सकते हैं. आपने कुछ उदाहरण दिए. लेकिन मेरा ये प्रश्न आपसे है कि जब सरकार भी सोच रही है कि शहरी रोजगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अखबारों में ऐसा आता है कि अभी तो कोरोना के बाद स्थिति कुछ देर के लिए बहुत खराब थी लेकिन अभी काफी संभल गई है और सरकार को ये जरूरत नहीं है अभी सरकार को शहरी रोजगार लाने का. मतलब अभी ही 4 दिन पहले ही अखबार में ऐसे आया था. तो आपका क्या सोच है कि शहरी रोजगार की कितनी जरूरत आज के दिन है या नहीं है? और आप मतलब आपको क्या लगता है कि जो शहरों में मजदूर काम करते हैं उनको इस सहायता किस प्रकार, मतलब कितना मददगार हो सकता है और क्या अभी भी इसकी नीड है या नहीं? शहरी बता रहे हैं. शहरी में हाँ, जो सुने तो शहरी में बिल्कुल होना चाहिए. शहरी वाला जो काम है, जो अथी है, से सब बिल्कुल होना चाहिए. रोजगार गारंटी चलना चाहिए और काम भी मिलना चाहिए. सब काम बताइए. ये नगिनी जी मैं इस पे और जोड़ू तो बहुत लोगों का ये कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है आज. तो आपको क्या लगता है कि क्या मजदूरों को आज के दिन शहरी जगह पे काम की जरूरत है या अभी सब ठीक हो गया है कोरोना के बाद? तो जरूरत है कि कैसे नहीं है? है जरूरत, कैसे नहीं है कि पूरा जरूरत है कि अब नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएगा तो खाएगा का? मजदूरा के हक है, मजदूरा के गरीब को ये संविधान है कि काम करेगा नहीं तो खाएगा क्या? हम लोग मजदूरा हैं, मजदूरा शहरी वाला भी है, तो कैसे नहीं काम होगा? जरूरत है काम करवाना, काम करना, हम लोग के मजदूरी मिलना. ठीक है. सबिल, आपको कुछ जोड़ना है इस पे? जी बिल्कुल. मतलब जरूरी है, चलना चाहिए शहरों में भी. क्योंकि मतलब अगर अपने घर पे, अपने परिवार पे अगर लोग रह के अपने आसपास में काम करेगा तो मतलब अच्छा होगा. बाहर जाना नहीं पड़ेगा, दूर जगह पे जाना नहीं पड़ेगा.
ठीक है। आपको कभी भी और इस उत्तर को और जोड़ना है तो प्लीज बता दीजिए, तो फिर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। अंत में Soumya, the question to you is, I mean, NREGA has really given an opportunity to demonstrate what exactly institutionalization of accountability can look like. So what, I mean, in terms of an urban right to work, what do you think are essential elements of transparency, accountability, grievance redress, and audits that have to be made space for? And in what parts would they be somewhat different from the way it was in NREG? Rakshita, I'm going to answer this question in English. I'll try and add some Hindi. But Yeah. I think that in an urban context, if you actually look at what the NREGA did for social accountability and, you know, transparency in rural areas, it pushed for similar MISs to put out information into the public domain about all schemes related to the poor. It also, the social audits of the NREGA also kind of triggered social audits of other schemes, not just NREGA, but pensions, housing. It also triggered people to start asking questions, because when you have a huge cadre of trained youth who are asking questions in one scheme, then they start asking questions in other schemes. तो एक तरीके से नरेगा के सोशल ऑडिट ने मुझे कम से कम यही दिखाया है कि एक तो किस तरीके से सूचना पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, किसने काम किया, कितने दिन काम किया, कितना पैसा आया, वो एक ट्रिगर बना कि लोगों ने कहा अगर नरेगा में ये हो सकता है कि तो बाकी स्कीम्स के साथ क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप अर्बन एरिया में देखें तो जिस तरीके की opaqueness hai, you know, it is impossible to get information about any scheme. It's almost people will throw up their hands and say it's too difficult to collect this information, to get this information. One example, BOCW, I remember 3 years ago we were asked by the Andhra government 4 years ago to do an exercise of the BOCW social audit. And the fundamental thing that they didn't have was even lists ki kaun hai beneficiaries, who are the beneficiaries, what are the kind of benefits they have received. And they said, you know, we never really thought about putting this information together. Jis tarike ka the abuse that poor people face in urban areas in terms of you know, not getting equal wages, not getting minimum wages, and look at the kind of even government, when it runs various programs in urban areas, whether it is housing for the poor in urban areas, whether it is you know, slum dwellers ke liye jab they start constructing 2-bedroom, 3-bedroom, whatever, 1-bedroom houses, or any other scheme run in urban areas, you find that getting information regarding those schemes is very difficult. In fact, people who have done social audits in urban areas say finding the beneficiary becomes very difficult, because you don't know where the beneficiary stays, wo kahan hai, kya hai, matlab unko kaise diya gaya, and very often these beneficiaries are fake. We also have found that there is no clear-cut mechanism of being able to choose people on a Varyata, you know, a list, like prioritizing a list of beneficiaries. Even in terms of, say, auditing ration shops or auditing anything in urban areas is much more of a challenge than it is in rural areas. However, I still feel that it is extremely important to trigger such exercises in urban areas because there is a requirement. Simple things. अगर आप कहीं हाईवे बन रहा है या कहीं रोड बन रहा है, हैदराबाद शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, you will hear the labor talking to each other in Hindi. आप उनसे पूछो कहाँ से आ रहे हो, तो कहेंगे हम बिहार से आए हैं, कहीं और से आए हैं, वो यहाँ काम करने आते हैं. और ये सारे outsourced through contractors, and this is happening across the country. They are all in, you know, they are all labor is transported from one place to another because it's easy to manipulate them. I feel that if you have an urban guarantee scheme,
a lot of these things will get streamlined in terms of knowing who that labor is, knowing where they are coming from, knowing who registered them, what work they have been given, how much they have been paid. I think it will change a lot of things in terms of the urban migrants' relationship with the state, with the local governments, and also मुझे लगता है कि purely from a political angle, it will also reap a huge number of benefits for any political party that actually thinks of this, because every few years you have municipal elections, and at that time a lot of promises are made, and by and large those never get fulfilled. So this is one way of at least ensuring that there is greater engagement with local governments in urban areas, and with the local bodies also getting involved in the entire exercise. And honestly, we do spend a lot of money in municipalities and urban bodies. It is not as though we are not spending money. I mean, Mr. Vijayanand sir can bear me out, I don't know, but I'm sure it's much more than what we spend on NREGA in any state. So it's important for us to start thinking about where and how these accountability structures are actually built in service delivery, and even larger questions of governance and citizen engagement. Right. Thank you. Thank you very much. So now I'll just go through some questions that have come from the participants. And I think I can take a couple and I can sort of share them with you all. And I think whoever would like to respond, please feel free to do so. So one question from Indira Hirve, actually, that NREGA also benefited tremendously from academic feedback that was constantly provided, and you had academic groups that were watching the implementation of NREGA and were giving feedback, and also that there was a political and bureaucratic dispensation that was open to criticism. So how much did these two factors lead towards strengthening the implementation of NREGA? Anybody would like to respond? I mean, I'll say a little bit about it, then whoever else would like to say both on both things. Firstly, one of the things that NREGA has suffered, I think, a lot was these assertions that used to be made right at the beginning by economists, or I would say so-called economists, writing in pink papers where they said the whole economy will collapse. Some people said you may as well throw money from helicopters. All those various things that they said that it won't cost 40,000 crores, but it'll cost 3 and 4 lakh crores. All that was turned out to be wrong. So there were one set of academics who were really applying themselves to ki kaise NREGA chal raha hai, and they've been of great benefit. And another set who were just making assertions. And there are many assertions that are made about NREGA. It is true that NREGA could be much more productive and efficient in turning out assets. But जो हमने देखा भी है, प्रधानमंत्री ने जो कहा, it's a monument to failure, केवल you are only digging ditches, all this is patently false. और NREGA के खुद के वेबसाइट पे जाओ तो दिखेगा कितनी सड़कें बनी हैं, कितने तालाब बने हैं, कितने पेड़ लगे हैं, कितने ग्रीन वर्क्स हुए हैं, वो सब, और वो डॉक्यूमेंट हुआ है एकेडमिकली. तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज मेरे हिसाब से जो NREGA में हुआ, वो इन्होंने एक नरेगा समीक्षा किया था, where they did not actually, the Ministry of Rural Development, it should be emulated by all ministries. Credit, I think, to Mr. Jairam Ramesh in that, because he led that kind of effort or that initiative, where he said, we will not study NREGA, we will take a summary of all the major studies on NREGA and put them. और ये कई जगह हम लोग कहते हैं, जब लोग कहते हैं नहीं कोई काम ही नहीं हुआ, हम कहते हैं स्टडी एक भी दिखाओ जहाँ काम नहीं हुआ, क्योंकि है नहीं ऐसा स्टडी जहाँ कहता है काम नहीं हुआ. वो स्टडीज बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाते हैं, फ्रॉम women's participation to work to various things which allow us, which is what has partly kept NREGA alive all these years, because it's backed by solid evidence
even critics earlier, like the World Bank used to say, don't have minimum wages, don't do this, now says put much more money into it. So it's something, even those kinds of skeptics in a sense have come on board within the area. And the second point, actually, I'll leave at this. No. Can I, Akshita, can I respond to a couple of points? Yes, sir. Please. Okay. The first is a specific question asked by Professor K.T. Ravindran. The urban non-formal labor and the urban employment guarantee. Of course, to start with, they will be the persons there. And somebody asked a question on, is not urban livelihood mission very important? Yes, that's perhaps the most important question. We can build an urban wage employment program only on an urban livelihood with a SHG network. Because the poor get organized. The poor don't know each other in the urban areas, even if they go to the same workplace. So organizing the poor, of course, we state that we invite a lot of opposition, but that is the most important thing. Once you have that, the demand factor for many urban services for the poor would come, because urban poor are in substantial number, and from the votes point of view, people would have to respond. Now they are so scattered and all that, and Kerala's experience shows that even in a metropolitan city like Kochi, you can have a strong urban livelihood SHG network. So that's very important. Once that is there, you can link it with the urban wage employment program. And then it is not just social capital, they also get the civic capital and what I would call the political capital. This means getting into resource allocation and developmental decisions, even as a demanding factor. Then somebody asked me about the urban employment guarantee scheme in Kerala, the Ayyangadi scheme. Unfortunately, it is not act-based, it is not demand-based, it is allocation-based. So when government doesn't have a fund, it gives 75 crores, 100 crores, big enough by national standards, but not enough for the program. And then another thing, a larger philosophic reflection, is that we need the concept of right to city, which was discussed at one point of time in urban development circles in Delhi, but then we gradually left it. But then I would really point which Nikhil hinted, that we need a livelihoods act, we can have an act like that, rather than an urban wage employment act. Because you have to bring a lot of things together. And in urban, opportunities are more, especially in middle and bigger cities, not exactly in small towns, they just become towns. So your health, education, shelter, things like street vending, and multiple livelihoods. Because urban people don't depend on one livelihood. 4, 5, 6 kind of livelihoods that depend. Okay. I think Jayadi Ghosh on how to raise finance. It's not only left economists, even those who don't particularly are not ideological like Mahendra Dev have given very practical suggestion on rights. And then outcomes. I want to narrate an incident. In 2014, when government changed, all the industries association went to government and said, scrap Narega. Because that is including Maruti, saying that it is denying us of labor. And in fact, that here for different reasons, elections and others, the urban, the livelihood program came down, the Narega program came down. And in 2015, the very same groups went and met Mr. Arun Jaitley and said, increase allocation for Narega because the purchasing power has come down. So this purchasing power is the bait for anti-Narega people. Rural, urban purchasing power will increase. What do they spend this money on? Not going to be food, initially food, but something else. So that is also very important. There have been, the outcomes are there. But then let us reflect again, the only rights-based act which has gone so far. So many acts have come. I think 3, 4 acts by the UPA government and 2 by the NDA. The right of people with disabilities and mental health care and all that. Let's critically analyze. This has come so far. This means there are important lessons to learn. Thank you.
Thank you. Thank you very much, sir. The next, actually linked to something that you had just shared, the next set of questions that have come relate to इस पूरे कोविड महामारी में नरेगा जैसे प्रोग्राम ने कितना मदद किया, and were there any kinds of changes in the way NREGA was itself implemented so as to be sensitive to the kinds of vulnerabilities that people are having to face because of corona? So were there some proactive measures taken? Were there some more sensitive, compassionate measures taken? And in general, what kind of a role did NREGA serve and play at the time of a lockdown and the consequences that followed it? Again, shall I go first? Sure. तो सबसे पहले मेरे ख्याल में एक बहुत दुख की बात है कि जब लॉकडाउन था पूरे देश में तो NREGA ने ना तो वो ऑर्डर फॉलो किया जो लेबर डिपार्टमेंट का था कि हर एम्प्लॉयर को पूरा वेज देना चाहिए, should give the wage for that period. It was impossible. You can imagine a worker for whom NREGA is a point of taking employment in their moment of greatest need. And this is what the greatest need was. We could see it on the streets, we could see it across the country, and it was not just those who were trying to come back home. अपने गांव में भी लोगों को employment चाहिए था और जा ही नहीं सकते थे घर से बाहर, लॉकडाउन लॉक्ड इन थे, तो उस समय पैसा देना चाहिए था लोगों को, at least even within that 100 days employment, पैसा नहीं दी, unemployment allowance भी नहीं दी. So that was an insensitivity in my opinion, a complete callousness of the whole NREGA administration, which is supposed to look at the rights of workers, labor, and particularly rights of people in greatest moments of distress. That having been said, NREGA, as soon as it opened up, इतने लोग आए, हमारे पास वो आंकड़े हैं कितना बढ़ गया, कितना लोगों के जान बचाया. विजयानंद साहब ने कहा था कि NREGA नहीं होता तो नेशनल डिजास्टर होता, क्योंकि इससे बढ़िया कोई डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर नहीं. और यही एक बात और है कि NREGA को इस साल 150 दिन का काम तो दे ही देना चाहिए. अभी लोगों के 100 दिन खत्म हो रहे हैं, and it should be something, there should be a disaster management component of NREGA where we should get 150 days should be declared immediately and 200 days should be given. So that's another part where its basics need to be come into place. But I think NREGA's design itself showed that wherever you have responded to its basics, work on demand, it has provided something, provided relief to people. Where you have not done that, where you have not followed its basic framework, we see terrible stories. Bihar का अभी story आया है, और जगह के आए हैं, even Bengal where there was greater distress because of floods or cyclone or whatever else. तो वहाँ दिखता है कि नरेगा के structure को follow करो, तो जैसे पहले economic downturn में नरेगा was a lifesaver, वैसे ही इस downturn में नरेगा has not only saved the lives of individuals, it has saved the lives of local ecosystems. क्योंकि वो बाजार, छोटे छोटे बाजार, छोटे छोटे कस्बों में इस वजह से चले कि कुछ पैसा था, डिमांड जनरेट हो सकता था in economic terms, and those markets also survived through this period where it would have been terrible. And I think NREGA needs more of those injections. Then of course we need to see all the special needs of people during COVID times, and I think NREGA in COVID times, actually if we think creatively, can actually become part of a Jan Andolan to fight COVID and all its various. Rakshita, can I also respond? Yes, please. So I'd actually like to say that as part of the survey that we did of about almost 1,500 families, we found that every other employment that people had earlier, engaged with, had pretty much been affected by the lockdown. So if I can just tell you very quickly, private college lecturers were coming to NREGA work sites to work because there was no other option. People working in laundries, because laundries, everything shut down. I mean, the lockdown basically meant
every form of tea stalls, laundry shops, every other shop except grocery shops which were allowed to function. Everything else shut down. Even today, if you see private colleges, schools are all closed. It's all online. They don't require as many teachers as they earlier physically required when a school was running, because you have multiple shifts and multiple classes. There were people who with degrees, you know, of B.Ed, M.Ed, in fact, some engineers who are coming onto the NREGA work sites and working. So if we have such a robust employment in this nation, why were people turning to NREGA? And I can vouch that none of these were ghost workers. We actually met those families. And they said that और क्या option है? मैं टी स्टॉल में काम करता था, मैं हॉस्टल में काम करता था, मैं कुक था, मैं एक बावर्ची था in a ढाबा, मैं एक प्राइवेट स्कूल में मैं PT टीचर था. All these people were turning up at NREGA work sites. So it shows that if at that point of time you did not have a scheme like the NREGA, these people wouldn't have known where to turn to. And I actually can vouch कि अगर नरेगा नहीं होता तो इतनी भयंकर नाराजगी, गुस्सा और एक तरीके से उबलता हुआ सोशल माहौल हो जाता ऑफ सिविल अनरेस्ट कि कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता. क्योंकि भूखे पेट बिना पैसे के, क्या आप सोच भी सकते हैं? मतलब मैं नहीं सोच सकती हूँ कि अगले दिन सुबह मुझे ये नहीं पता चले कि मैं कहाँ जाऊंगी काम करने के लिए. मैं आराम से एग्जिस्ट कर सकती हूँ. मुझे नहीं लगता में से कोई भी इस तरीके से जी सकता है. तो रातों रात जिनकी नौकरियां उड़ गई, जिनको कहा गया कि अब ये मतलब इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, हम क्या करें, वो नरेगा के वर्क साइट्स पे they were turning up. और they said, I mean, when we asked them, they said it's difficult work, but what else can we do? If we don't come here, there is no other scope for us to be able to support our families. So I feel that, you know, all those economists who have spent hours criticizing the NREGA, if during the pandemic they actually stepped out of their houses and gone to these rural areas and seen what was happening to those who are coming onto this onto these work sites, they would have realized that it was genuinely a lifesaver. And that's why I keep feeling that even for urban areas, like Vijayanand sir said, maybe a livelihood guarantee, but ultimately it is the responsibility of an elected government to think of its people. I mean, why should it be encouraging contractors and outsourcing, etc., when it can directly give employment to so many people, lakhs of people, in fact, and with their rights enshrined, rights taken care of. So. Right. Thank you. So, did you want to respond? Because I saw you switch on your video and audio, and I'm wondering if you wanted to respond to the question. Want me to? If you would like to. Otherwise, there are a set of questions that I do have more come. I can put that and maybe together you can after respond. that. You put your Okay. Okay. So the next set of questions that's come is there an opportunity to collectivize workers, and can there be a cooperative framework for workers and not just individual workers in an urban employment guarantee? So that's one question. And the other is, can we also look at different workers from different skills coming into an urban employment guarantee? So whereas NREGA needed what the state calls unskilled manual work, can there be different kinds of work requiring different skill levels in an urban employment guarantee? Okay. First question, yes, we need to collectivize workers right from the beginning. One of the things we missed in NREGA, though the provision is there, we failed to create labor groups. Shram Shakti Sanghas were made even in Andhra Pradesh, nobody pushed it. Had they been united, about 6 crore people in India as a labor collective would have really gained a lot. And that's one thing. Then something which the ministry started earlier and now they have renamed it, skilling within the NREGA. So somebody asked, are you going to work forever as hard labor? No.
First is skilled agriculture labor. Where means you can even be uniformed with machinery and do a turnkey job. You know what to plant, what to do, how to harvest, everything. So that's a skilled agriculture labor. It's in between this and other skilled work. Then could be construction labor. Then could be some other jobs. Which is why that you can't have a skilled employment guarantee program. It doesn't work because the market, wages, skills and matching demand and all that will be quite complex. And government may start, but it will be a pretense. But there is the urban livelihood mission, which has to look at higher and higher livelihoods, which is doable, but painstakingly slow. It will take about 10 years for it even to root. But we need to look at, otherwise the urban poor will be scattered and left to their own things. They can't make any headway. Yeah. And I think the last एक आखिरी सवाल आया है, which maybe Soumya, you can respond if you can, if you like, कि टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाता है NREGA के implementation में. In fact, it's considered one, I mean, a program in which all kinds of technological innovations are attempted to see, because the scale is just so enormous. So to learn from the possibilities. तो इसमें जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स का भी एक शुरुआत किया गया था. So how far do measures like geo tagging or other such kinds of technical innovations in trying to measure and monitor NREGA works? What kind of impact do they have? So maybe Soumya, if you can respond, and then if others have something to add. Technology is only a means, it's not an end by itself, and it's not a road by itself. So yeah, geotagging has been useful to the extent that assets have been tagged. How successful it's been is a big question mark for me, because if you have a tank, minor irrigation tank that's being dug every year or every 2 years, and you have the same thing being geotagged, then you'll also have the critics of NREGA using it to say कि भाई देखो यही वाला टैंक 10 साल से ये लोग खोद रहे हैं. So I think it has its flip sides, it also has its flop sides. Having said that, I think technology has been an enabler, because if you see the entire real-time MIS that's been designed around the NREGA, it's fantastic. Anybody, I mean, it makes every individual, including the beneficiaries or the workers themselves, and also those who are interested in this scheme, it gives them an opportunity to become auditors. It gives them an opportunity to go and do their own verification. So while I think it's been an enabler of times, I would not put all my eggs into a single basket and say technology है, I mean, which is very often being told to me कि भाई अब तो जियो टैगिंग भी आ गया, अब तो हम रियल टाइम MIS है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो क्या सोशल ऑडिट की जरूरत है. आई कीप टेलिंग पीपल कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर सकते हो तो कागज में जितने घर बन जाते हैं उतने तो MIS में भी बन जाएंगे. फिजिकली आप जब तक जाके वेरीफाई नहीं करो, I mean, ultimately, even if it's in the public domain, somebody goes and verifies it, it is a form of verification that's happening. So I feel that all said and done, while technology is an enabler, citizen engagement and citizens' own involvement in the exercise is equally critical. So I would say in some ways where things like geotagging, etc. have been used, it's been useful to a great extent. However, I also feel it's very top driven in terms of every week इतने assets आपने नहीं geotag किए हैं, इतने करो, ऐसे करो, वैसे करो. कई जगह internet connectivity नहीं होता है, कई जगह mobile phones नहीं use होते, नहीं, there is no connectivity for them to, or the connection to be able to do that geotagging. There are also a lot of issues related to it. But that's a whole aside. So I think one needs to look at both sides of the use of technology in NREGA. Point I want to add, technology should not be for centralized MIS, it should be decentralized. And now technologies have become so people friendly, and even I am a beneficiary of this. I was a tech-averse person till recently,
And this COVID has added to it. For example, in Kerala, the Kudumbashree women have come out with 2 lakh WhatsApp groups covering 22 lakh women, most of them semi-literate. So huge possibilities are there, but you have to structure it in such a way it reaches the people and they can use it. So that's the kind. The last point I want to say, which is a lot of people are asking, was it a waste of money, this huge NREGA investment over the years? I just use the word diffused economic stimulus. In a village, 10,000 rupees comes. What does the woman spend that money on? Not much, in spite of all the research on NREGA, not much research has gone into the use of this money. And that is a huge multiplier effect. It was done in Kerala by Tata Institute about 11 years ago. How much women spend this money on? That's a major justification of NREGA. So thank you. I think Rakshita has managed the time too well, or we have been too obedient. No. I think it all just fell together. So thank you to everybody, all the panelists who joined us. कहीं पे बहुत बारिश हो रही है. One small thing I want to say. Yes. One small thing. I forgot to mention the partner of today's partner with INHAF today is a Laurie Baker Center of Trivandrum. Coincidentally, I chair Laurie Baker Center now. It propagates Laurie Baker's ideology of green buildings and more so appropriate technology for the poor, labor intensive. And they can construct NREGA buildings at 50% or 55% labor. Wow. Okay. Thank you for sharing that. And also makes INHAF a very appropriate collaborator to have these conversations. So thank you to all. And before I just hand it over back to Kirti ji or friends from INHAF, it's very, it is difficult to summarize a discussion that really went and touched so many threads. But ये अच्छी बात थी कि ये इस पे चर्चा नहीं हो रही थी कि शहरी रोजगार गारंटी चाहिए या नहीं चाहिए. ये बहुत साफ था कि चाहिए. So it was a question not of if but more of how. इसको हम कैसे कर पाए ढंग से. और ये भी एक बहुत clear point जो resonate हुआ था that it's definitely an attempt to take this beyond and make it much stronger than an NREGA. So where NREGA was a right to an employment guarantee, we imagine a wider and more expanded understanding of the right to work, so that workers have a right to live near their homes, have access to minimum social security, and have a right to work with dignity and with fair wages. And also I think ऐसे चर्चाओं ये शुरुआत है and ऐसे बहुत सारे चर्चाएं होने की जरूरत है academics के साथ, bureaucrats के साथ, मजदूरों के बीच में, संगठनों के साथ. So I think the more such conversations happen and the more of us who try to come together, whether we agree, disagree, but productively engage with this conversation, I think we're all better off with it. So thank you again. To all the panelists, and thank you to INHAF as well. And Kirti ji, if you want to say a few words. Can you hear me? Yeah. Yes. Of course. Thank you very much, Rakshita ji. This is very thoughtful, I think, very contemplative, very rich in ideas, and in many ways, path tracing conversation that happened. Thank you also, Rakshita ji, for very smooth and effortless moderation that you did for this meeting. Many, many thanks. As you rightly said, it was such a rich meeting that it was hard, almost impossible to summarize. But I just picked up just one thing which I just wanted to say before move ahead. And this is something that Soumya ji brought out. And she said it very beautifully. She said, time obviously has come for this urban Manrega, whatever you want to call it. And there couldn't have been a better path breaker, path shower than Manrega and what it has done last 15 years. If you're talking about slums, if you're talking about migrant labors, if you're talking about, all the inequalities
Not that, I think, answer lies in one, but this is something which would really kind of set the ball rolling of a number of ills, that plague our cities. It's a tremendously interesting, important idea we've got to work with. Let me take this opportunity to thank this incredibly distinguished panel that we had for the creative ideas, for the thoughts. Not that we did expect anything less than what we heard. And let me personally thank each one of them. Vijayanand sir, thank you very much. It's such a privilege to know you. It's such a privilege to talk to you, even while talking to you on phone. There is so much that one learns. Thank you very much. You have been superb. नसीनी नगिनी बेबी जी, आपका बहुत ही आभार, आप आए, हाँ, इतना बोले, इतना समझाया और हमारे साथ बात की, बहुत ही आपका आभार सुनते हैं. Nikhil Saab, I've heard so much about you. This is the first time that I've come across and heard you. You're incredibly brilliant, and I'm so happy that we finally got you. And Soumya ji, thank you very much for your very, very thoughtful ideas and a very, very, very remarkable kind of observation that you made. We're very sorry that we missed out on Dr. Rajendran, who couldn't join because of an emergency at home. But we wish he was there. We obviously will find a way to get him and to talk to him and listen to him. As when we started, we had mentioned it very clearly, and I think it also was repeated by Rakshita ji, that this particular meeting was seen as a curtain raiser. And before we start talking, I think, on the whole idea of urban version of Manrega, we thought we would try and find ways to learn from Manrega, and we could not have done it in any better way, which also means that, we would come up with a number of meetings, such meetings, webinars on the whole design of the program. And fair amount of work has happened across the country. Large number of many groups are working on this. We hope to kind of bring all the stakeholders, all the workers together and share as much more as possible on this very important subject. Before I end, let me kind of make a small little announcement that the next webinar takes place just day after tomorrow. The 4 webinars we are going to have on water. It's called Rejuvenation and Restoration of Urban Water Ecology, and it will be anchored by Vishwanath, who's a trustee of Environment Trust. We look forward to your participation. And before we end, finally, let me take this opportunity to kind of thank our colleagues at Studio in Half, who have been working very hard behind the scene and are responsible for all the good thing that happens. So thanks, Dr. Hari Haran, Radhika, Shimul, Dwani, Erika, and Nita, for your hard work. Thank you very much. Once again, thank you very much for your being here. We learned enormously lot. It has opened our appetite on the subject, and we hope to do much more thinking and getting people together on this subject in the next few weeks' time. Thank you very much. Thank you. We also enjoyed it. Thank you. Thank you, Kirti ji.